Good to see you, students. This is Baqir. Welcome to the first lecture of post-independence era Jammu and Kashmir on the path of modernization. Students, इस लेक्चर में हम क्लास 10th की लास्ट चैप्टर जो कि न्यूली एडिट हुआ है पोस्ट इंडिपेंडेंस एंड जम्मू एंड कश्मीर ऑन द पाथ ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हम इस चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हमने प्रिंट कल्चर को देखा था और आई होप कि हमने पूरा चैप्टर कवर किए थे। और अब जो है हम इस लास्ट चैप्टर को डिस्कस करने वाले हैं। In the chapter, so far we have learned about some of the process and events that are critical to the understanding of modern world. इन चैप्टर्स में और बहुत सारे चैप्टर्स में हमने बहुत सारे प्रोसेस एंड इवेंट्स के बारे में देखा, लेकिन टुवर्ड्स हमने अंडरस्टैंड किया उन सारे चीज़ों को टुवर्ड्स द मॉडर्न वर्ल्ड। But in this chapter, we will shift our focus from global histories to regional history. लेकिन हम इस शिफ्ट में हमारा जो फोकस है वो हटाकर ग्लोबल हिस्ट्री से एक रीजनल हिस्ट्री की तरफ जा रहे हैं। In this context, the chapter would highlight economic and social changes that occurred in Jammu and Kashmir between 1947 to 1963. इस कंटेक्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ हम चीज़ों को हाईलाइट करेंगे सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस जो कि जम्मू एंड कश्मीर में हुआ 1947 से लेकर 63 तक के बीच में। It traces the trajectory of governance, planned economy, state building, reforms in agrarian, education and health sector, and other developmental programs that were initiated under the Naya Kashmir Manifesto. हम इसमें बहुत सारी चीज़ों को ट्रेस करेंगे जैसे कि प्लांट इकोनॉमी, स्टेट बिल्डिंग और रिफॉर्म्स क्या क्या हुए, अग्रारियन रिफॉर्म्स क्या थे, एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर एंड कुछ डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स जो कि नया कश्मीर मैनिफेस्टो के अंडर इनिशिएट किया गया था। The chapter further show how the developmental programs that were initiated under Sheikh Ghulam Muhammad Abdullah were given a practical shape when Baqir Ghulam Muhammad took over the charge of governance as the second prime minister, the term used for head of the state till 1965 of Jammu and Kashmir. इस चैप्टर में हम फर्दर देखने वाले हैं कि डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स क्या क्या इनिशिएट किया गया था अंडर शेख अब्दुल्ला, एंड इसके अलावा हम उसको किस तरह से प्रैक्टिकल शेप में लाया गया अंडर द बख्शी गुलाम मोहम्मद। तो हम ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। और जब बख्शी गुलाम मोहम्मद बिकेम द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 1965 तक, तो under the Bakshi Ghulam Muhammad, lots of changes towards the health sector, education sector, and other sectors, which was undoubtedly one of the most significant changes which he had done. तो जो एक बहुत बड़ा और बहुत ही ज़बरदस्त चेंजेस हुए अंडर द बख्शी गुलाम मोहम्मद, तो हम ये सारे चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली इस चैप्टर के द्वारा हम पूरा कवर करेंगे कि हाउ द डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स एंड हाउ दिस डेवलपमेंट programs were initiated under the Naya Kashmir Manifesto, and also we will discuss what were the main changes which gave a more practical shape by the second Prime Minister of the state, Bakshi Ghulam Muhammad. सो स्टूडेंट्स, हम आज का लेक्चर यहीं पे स्टॉप कर लेते हैं। अगर आपको कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट रहता है तो आप किसी भी प्लेटफॉर्म के साथ कनेक्ट होके मुझसे जोड़ सकते हैं और अपनी क्वेरीज हमें बता सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग।
Bye bye. Had a good day.